Bismillahirrahmanirrahim. We were studying the inventory valuation, and in the last video we have discussed about the measurement criteria of inventories, which is inventories should be measured at lower of cost and net realizable value. So we have covered the net realizable value. There are some more aspects of the net realizable value, and in this video we will cover that. Okay. So far we have discussed that we were given in the data the cost of the inventory and the net realizable value of the inventory was given, and we have to compare both of them, and the lower of cost and NRV, we have to record whichever is lower. Okay, and we have to record the journal entries accordingly. Okay, so that's the area we have covered so far. So in today's video we will discuss if there are categories of inventory items is given to us, so how we will calculate the NRV and how we will compare it with the cost. We will going to look at that in this video. Okay, so let's go into the example. अब तक हमने जो पढ़ा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में, हमने ये पढ़ा था कि मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है, और हमें पता है मेजरमेंट क्राइटेरिया ये है कि इन्वेंट्रीज शैल बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. उसमें हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट दी हुई होती है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई होती है. हम ये कंपेयर करते हैं कि अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से कम हो गई है तो हम कॉस्ट को रिड्यूस करके एनआरवी तक ले आते हैं और एनआरवी राइट डाउन की एंट्री बुक कर देते हैं और इन्वेंट्रीज को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे रिपोर्ट कर देते हैं. ये हमने देख लिया था. आज की इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि अगर हमें इस तरह का डेटा अवेलेबल है हमारे पास कि इन्वेंट्री जो है उसके मुख्तलिफ आइटम्स हमें दिए हुए हैं और उन आइटम्स की डिफरेंट कॉस्ट है और उनकी डिफरेंट NRVs हमें दी हुई है, नेट रियलाइजेबल वैल्यूज हमें दी हुई है, तो उस केस में हमें NRV टेस्टिंग जो है वो कैसे करनी होगी, कि यानी कि जो हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट को नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, वो हमें कैसे करना होगा. ठीक है, तो लेट्स गो इनटू द एग्जांपल. आई हैव क्रिएटेड दिस डेटा just to show you how the NRV testing will be done if we are given that different items of the inventory. Okay, let's start. XYZ Electronics is engaged in selling variety of television sets. The company is having December 31st as year end. On December 31st 2021, the accountant compiled the data of available inventory of television sets and their respective cost and estimated selling prices. Okay. The company is in the process of closing its financial year and preparing financial statements for the year ended December 31st 2021 and needs to compute the value of inventory to be reported in the financial statements and record the necessary adjustments. Below is the record of available inventory of television sets. So this is the data provided to us, okay, in which there is a business XYZ Electronics which is engaged in selling of variety of television sets. Okay, so they have wide variety of television sets, they are selling it. Okay, it seems they are only selling it, they must be purchasing and selling it, and December 31st is their year end and available inventory is given below. So there are some items given in the inventory, which is, it seems that there are 9 items in the inventory, and there are categories of those inventory items. Like I can see first category, it can be LCD TV, the second category can be LED TV, and the third one is the smart TV. Okay, and the respective cost of each item is given against each item.
and their estimated selling price is also given at item level. Okay, so this is the total data available, and the requirement we have: compute inventory value to be reported in the financial statements. So we know that inventories need to be measured at lower of cost and net realizable value. Whichever is lower, we will need to report the inventory at that value. And also we need to prepare necessary journal entries, if any, required. After the inventory NRV testing, we will see if any journal entry is required. Okay, so this is the data. अब यहाँ डेटा जो हमें अवेलेबल है XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें ये है कि आइटम बाय आइटम हमें कॉस्ट दी हुई है. ठीक है, ये सारे के सारे टेलीविजन सेट्स हैं, लेकिन इसमें कैटेगरीज इस तरह से डिफाइन है कि एक कैटेगरी हम कह सकते हैं कि LCD टीवी की कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी हम कह सकते हैं LED टीवी की कैटेगरी है, और लास्ट वन जो है वो हम कह सकते हैं कि स्मार्ट टीवी है. तो हर आइटम की हमें कॉस्ट दी हुई है, हर आइटम की हमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है. ओके, अच्छा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है उसको मैं कह सकता हूं कि ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है. नेट रियलाइजेबल वैल्यू की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं है. तो हम अज्यूम ये कर सकते हैं कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ही इस इन्वेंट्री की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है. ठीक है, तो ये हम अज्यूम करेंगे. So in this example, we have given the cost and estimated selling price of each inventory item. Let me recall you the definition of net realizable value. We studied that net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. So in this example, we don't have any estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale. So we can safely assume that this estimated selling price is the net realizable value of each item. Okay, so now we'll see how we can do this NRV testing when this type of data is available. So from this data, apparently it seems that the cost of the inventory, which is given here, is 230,000, and the estimated selling price, which we are assuming to be the net realizable value, is 240,000. So if we go in the definition, lower of cost and net realizable value, so we see that cost is lower and net realizable value is higher, so we need to value the inventory at cost. Okay, so apparently it seems this that we don't need any NRV adjustments in this inventory, but the point is we cannot do this NRV testing on a totality level when this type of data is given. So as per the International Accounting Standards of Inventories, we need to do the NRV testing of inventories at item level. Okay, so whenever we have this type of data, we need to do this NRV testing at each item level instead of totality level. Okay, like anyone can think that we have inventories which is a similar type of inventories like all our television sets. Okay, there may be difference in the model and variety, but all are similar nature, the purpose is similar. Okay, more or less similar, there are variations, but anyone can think that these are all television sets, so why can't we do this on a totality level? So the answer is we have cost available of each item and the estimated selling price of each item is available. So these are the different items and these are sold separately. Okay, so we don't need to compute and do the NRV testing at a totality level. We will do it at item by item, and it is also required by the International Accounting Standards.
अब इस डेटा में हमारे पास जो है कॉस्ट है और एनआरवी है सारे आइटम्स की, तो हम टोटलिटी की बेसिस पे भी इसको देखें अगर, तो हमें लगेगा कि कॉस्ट तो कम है और एनआरवी ज्यादा है, तो हमें किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इन्वेंट्री के, वो ये कहते हैं कि हमें जो है आइटम बाय आइटम हमें एनआरवी टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हर आइटम की कॉस्ट भी अवेलेबल है, हर आइटम की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है जो कि उसकी एनआरवी है, वो सब अवेलेबल है। तो हम ये सारी टेस्टिंग आइटम बाय आइटम लेवल पे करेंगे। अच्छा, अब अगर हमें इसकी टेस्टिंग करनी पड़ जाए तो हम इसकी जो वैल्यू लेंगे, मैंने यहाँ पे कंप्यूट की हुई है वो इस कॉलम में। In this column, I have taken the valuation that needs to be considered for the reporting purposes. Means from this value we will compute the amount of any adjustment, whether it is required or not. Okay, whether we need to write down any inventory to the net realizable value or not. Okay, so we'll have to see item by item. So the first item we have cost of 10,000 and the estimated selling price, which is NRV, is 8,000. So we need to report it at 8,000. Similarly, here in second item we have 12,000 is the cost, 15,000 is the NRV. We need to report it at lower of cost and NRV, so we will take 12,000. And similar is the case with third item. We will take it the cost which is lower than the NRV. In fourth item here, we have 18,000 is the cost and 17,000 is the NRV, so we'll take 17,000, which is lower. Fifth element, which is an LED TV, we have cost is 15,000 and NRV, which is estimated selling price, is 13,000. We'll take 13,000. Sixth item, we will take the NRV, which is 21,000. And in seventh item, which is a smart TV, cost is lower, which is 41,000, so we will report it at cost. Okay, so at the eighth item we have 36,000 cost and 41,000 is the estimated selling price, so we will take cost which is lower. And the last item we have is a smart TV, the cost of which is 42,000 and the estimated selling price is 31,000. So we will take 31,000, which is lower than the cost. So these are the values at which we'll report this inventory. So we can say that the amount at which inventories need to be reported in the financial statement, it should be 209,000, because we need to do this testing at item level instead of totality level. Okay, अब ये वैल्यू जो इस कॉलम में हमने ली है, हमने देखा कि कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर किया और जो भी कम थी उसमें से उसको हमने इस कॉलम में लिख लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 8,000 ले लिया, यहाँ पे 12,000, फिर 30,000, फिर 17,000, 13,000, 21,000, 41,000, 36,000 and 31,000. So these are the values. ये वो वैल्यूज हैं जिस पे हमने अपनी इन्वेंट्री को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करना है। अब क्योंकि हमने इसको आइटम बाय आइटम देखना होता है, हमने इसको टोटल लेवल पे नहीं देखना होता। ठीक है, तो ये 209,000 जो अमाउंट है, ये हमारी वो वैल्यू है जिसके ऊपर हम इन्वेंट्री को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट करेंगे और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं कि अगर इसकी एडजस्टमेंट करें तो इसकी एडजस्टमेंट आपको पता है कि एडजस्टमेंट क्या होती है। देखें यहाँ पे जो राइट डाउन का अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा कॉस्ट जो है इसकी 230,000 और माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज 209,000. So we need to take the difference of these two, and I have taken that difference 230,000 minus 209,000, which is equals to 21,000. So I have made a journal entry
we all know that we had to expense out the amount of NRV write down, so we debit our cost of goods sold by 21,000 and we'll create a contra account for inventory with the name of NRV provision and we will credit NRV provision account. Okay, so accounting entries की simple है, cost में से आप NRV वैल्यू जो अभी हमने कंप्यूट की है 2,09,000 वो माइनस कर देंगे कॉस्ट में से और हमारे पास आ जाएगा 21,000 से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे और एनआरवी प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री हो गई। नाउ वी हैव सीन द accounting entries, we have already seen the NRV testing at item level, but anyone who is working on this data can think why we cannot make a category of each inventory item and then do the NRV testing of this inventory at a category level. Let's assume we have three categories of the data of the inventory. Like LCD TV, we can create one category, LED TV, we can create second category, and the third one is the smart TV. Okay, so why can't we do this NRV testing at a category level? What we will do, we'll total the cost of each category. Like for LCD TV, the cost would be the total of these items, like 52,000 of first three items, and the NRV of these three items would be 63,000. Okay, so why can't we do this NRV testing at category level? Okay, so I will explain this through the computation. Okay, the answer is we cannot do this computation at category level because it does not give me a realistic picture of my inventory value, and how I will show it with the computation. Okay, I have done this computation here just to show you why it did not give me a realistic picture. Okay, so here are the three categories: LCD TV, LED, and smart TV. Cost is here, which is 52,000. NRV is here, 63,000. I took cost being it lower. Okay, second category I took NRV, which is 51,000 and it's lower than the cost, so I took 51,000. And in the third category I took cost, which is 119,000, which is lower than the NRV. And see, the total is coming at 222,000, and this is the amount at which I should have reported my inventories in the financial statements. And if I compare it with the cost of total cost is 230,000, and this amount which is coming at a category level testing is lower than the cost, but it is not giving me a realistic picture. Why? Because it is, if you see the NRV write down amount, which is difference of cost and this 222,000, it gives me 8,000, which is much lower than the amount which is coming from the results of testing at item levels. In item levels, when we did this testing, the result was 21,000. Okay, and this 230,000 minus 209,000, which is 21,000, and the NRV write down expense was 21,000. And as per the testing, as per the at the category level, it gives me 8,000. So this category level testing is not giving me a realistic picture of the NRV write down. Okay, and the expense is on a lower side, and there might be a risk that my expenses will be understated in the financial statement. So in order to avoid that risk of understatement of expenses, International Accounting Standards require us to do the NRV testing at item level. So this is the reason we are doing the NRV testing at item level instead of totality level, instead of category level. So we can only do the NRV testing at item level. That's why it is required in the International Accounting Standards. Okay. So यहाँ पे जो डेटा हमें पास अवेलेबल था
उसमें ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये सारा डेटा जो है, ये सारी इन्वेंट्री जो है, ये एक ही आइटम की है, यानी कि टेलीविजन सेट्स हैं लेकिन उनके मॉडल्स डिफरेंट है, तो अगर हम कैटेगरीज बना दें हर मॉडल की, मॉडल के हिसाब से, तो हमारे पास 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। तो हम सवाल ये है कि हम कैटेगरी लेवल पे ये टेस्टिंग क्यों नहीं कर सकते? उसका आंसर ये है कि कैटेगरी लेवल के ऊपर ये टेस्टिंग जो है इतनी रियलिस्टिक पिक्चर हमें नहीं देती एनआरवी इन्वेंट्री की वैल्यू की। और ये अभी हमने देखा कि किस तरीके से, क्योंकि आप देखेंगे 3 कैटेगरीज मैंने बनाई और इसकी कॉस्ट भी मैंने ले ली टोटल करके, इसकी एनआरवी ले ली टोटल करके, और यहाँ वैल्यू की अमाउंट कॉलम में मैंने वो आइटम लिए जो लोअर है, यानी कि अगर कॉस्ट लोअर है तो कॉस्ट ले ली, अगर एनआरवी कम है तो एनआरवी ले ली। ठीक है, तो इससे जो अमाउंट मुझे मिला वो मिला 222,000। जबकि अगर आइटम लेवल पे मैंने कंप्यूटेशन देखूं तो वहां पे जो वैल्यू आ रही थी वो थी 209,000, ओके, विच इज मच लोअर देन दिस 222,000। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे कैटेगरी लेवल की कंप्यूटेशन से मैं अपने एक्सपेंस का अमाउंट निकालूं, जो कि कॉस्ट माइनस दिस अमाउंट करूं, तो मेरे पास आता है 8,000, सही है। और अगर आइटम लेवल पे कंप्यूटेशन करूं तो मेरे पास आता है 21,000। ठीक है, तो अब देखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा था कि एक रिस्क होता है कि हमारे एसेट्स जो है, हमारे एक्सपेंस जो है, हमारा एक्सपेंस और लायबिलिटीज जो है अंडर स्टेट ना हो जाए, ये एक रिस्क होता है। ठीक है, तो अगर हम कैटेगरी लेवल की कंप्यूटेशन करेंगे तो हमारा रिस्क ये है कि हमें एक्सपेंस जो है हमारा कम रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए 21,000, लेकिन एक्सपेंस हमारा रिकॉर्ड हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 8,000, जो कि अभी हमने एंट्री देखी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट ऑन एनआरवी प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है, तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमें जो एनआरवी की टेस्टिंग करनी होती है वो आइटम लेवल पे करनी होती है। यही रीजन है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने भी हमें ये रिक्वायर किया है, हमें ये रिक्वायरमेंट है उसकी कि हमें एनआरवी टेस्टिंग जो है वो आइटम लेवल पे करनी होती है, हम उसको कैटेगरी लेवल पे भी नहीं करते। ठीक है, और उसका रीजन अब आपको समझ आ गया होगा कि उससे ये जो एक्सपेंस है हमारा वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो उससे एक रिस्क हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि हमारे एक्सपेंसेस जो है वो अंडर स्टेट ना हो जाए। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर है। So in this video we have seen that whenever we have cost and NRV available at an item level, we need to do the NRV testing of the inventories at item by item, okay, not at the totality level, not at category level, because it does not gives us a realistic picture of the value of the inventory. Okay, तो ये बात हमें समझ आ गई कि हमने जब हमारे पास कॉस्ट और एनआरवी होती है इन्वेंट्री की, तो हमें एनआरवी टेस्टिंग जो है आइटम लेवल पे करनी होती है। हम टोटलिटी लेवल पे या कैटेगरी लेवल पे हम एनआरवी टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें कोई रियलिस्टिक पिक्चर नहीं देती। अभी हमने देखा किस तरीके से। If you still have questions in this topic, kindly comment on the video. I can respond at. If you have not subscribed the channel, kindly subscribe the channel. I'm concluding this video. Thank you.